Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be doing the summary of the first chapter from the book Beehive class 9 CBSE, and that is The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So today we'll be doing the summary of this chapter, and already I have uploaded a video where the line by line explanation of the chapter is provided, and the link of that video is given in the description box. You can watch that video if you have any doubt regarding this chapter. Well, my dear children, this story or this chapter unfolds the picture of future schools where the mechanical teacher will teach the students and books will be meaningless. Actually, the students will learn only from the e-books, and the class tests will be conducted online, and the internet will have wide applications, and the subjects like history and geography will be no more difficult for the students. So now let's discuss this chapter in a detailed way. The story deals with a boy and a girl, Tommy and Margie. They find out something about the school of the past. So in this story there are two children. One is a boy, his name is Tommy, and another is a girl and her name is Margie, and they found something that was related to the schools of the past. इस कहानी में हम ये देखते हैं कि दो बच्चे हैं इस कहानी में, एक टॉमी और एक मार्जी, और टॉमी और मार्जी इन दोनों को कुछ ऐसी चीज़ मिली है जो पहले पुराने ज़माने में जो स्कूल्स हुआ करते थे उनसे रिलेटेड है. ऑन 17th May 2157, Tommy, a 13-year-old boy, finds a real book in the attic which has been printed on paper. Tommy and Margie both take a look at it. Date is also mentioned, date भी दिया हुआ है, and the date is 17th May 2157. Or 2157, and still we are in 2020. Literally, some 100 years, more than 100 years after this, this would be the scenario. और आने और आगे 100 साल से ज़्यादा वक्त के बाद का समय हम बात कर रहे हैं. और 2157 में हम क्या देखते हैं कि टॉमी को एक किताब मिलती है, वो भी एक रियल बुक है. और कहाँ से मिलती है? इन द एटिक. व्हाट डू यू मीन बाय एटिक? इट माइट बी ए स्टोर रूम, या फिर जो रूफ या जो स्टेयर्स के नीचे थोड़ी सी जो जगह बची होती, स्पेस, उसे भी एटिक कहा जाता है. एंड दैट बुक इज बेसिकली एवरीथिंग इज प्रिंटेड ऑन पेपर. और वो ऐसी किताब है जहाँ पर हर चीज़ कागज़ पर प्रिंट हुई है. द बुक इज रियली ओल्ड एंड द पेजेस आर येलो एंड क्रिंकली. In the year 2157, this kind of books will not exist anymore. और ये जो book है, this book is very old. Even the pages have turned crinkly. Crinkly means, with lot of folds or lines, जिस पे बहुत ज़्यादा पन्ने जो हैं, pages जो हैं मुड़ गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा pages पीले पड़ गए हैं, और एक प्रकार से उन पर जो है लाइन्स बन गई हैं, क्योंकि बुक बहुत पुरानी है. And another thing that is written here is, in the year 2157, this kind of books will not exist anymore. And you know it very well that nowadays, we are in the era of technology, और धीरे धीरे स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं एक तरीके से. You just imagine what will happen in 2157, 2157 में क्या हाल होगा. And that is the time when there won't be any books, real books, talking about real books, जहाँ पे पेपर्स पर प्रिंट होती हैं. ठीक है, ऐसा समय आने वाला है.
At that time, words will move on a TV screen. These TVs can contain over 1 million books. That is why Tommy thinks that they are much better than the old schools. Now, at that time, what will happen? There won't be any real book, and almost all the books will be seen, will be studied, will be read on TV screens. That is what we call it e-book or electronic books. आज के समय में भी हम मोबाइल में, लैपटॉप में, अपने पीसी पर हम जो है बुक्स पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पर भी बुक्स हम पढ़ सकते हैं. बहुत सी बुक्स लैपटॉप पर हैं जिसे ई बुक बोला जाता है. और वैसे ही उस समय भी क्या होगा कि सारे बुक्स जो हैं कंप्यूटर में अवेलेबल होंगे. सारे बुक्स जो हैं लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स में अवेलेबल होंगे. ऐसे जो रियल बुक की तरह जो हम अपनी बैग में रखते हैं, अपने बगल में रख के पढ़ते हैं, जो जो पेजेस होते हैं, पेजेस के फॉर्म में, वो नहीं होंगे. ठीक है. Tommy says that the book is about school, but Margie hates school and she does not understand why someone would write about it. Now, Tommy, he tells Margie that this book is about school, but Margie is somewhere who hates school and she does not understand why someone would write about it. Margie, she is not at all fond of school and she hates school. And what are the reasons, that we will find out in the coming slides. तो मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत नफरत करती है स्कूल से. एंड शी थिंक्स, और मार्जी का ये सोचना भी है कि स्कूल में ऐसा क्या रखा है कि स्कूल के ऊपर कोई किताब लिखी जाए. She is having problems with learning geography from her mechanical teacher. It is black, large and has a screen on it. It teaches the students, gives them exercises and ask them questions. So what is the biggest problem that Margie is facing? The biggest problem is she is having a lot of problem, especially learning geography from her mechanical teacher. What do you mean by mechanical teacher? Mechanical teacher means a teacher who is actually a machine, who is not a human being. Mechanical teacher मतलब एक machine, एक computer. कहने का मतलब यह है कि जो आने वाले 100-150 साल बाद what will be the condition? कंडीशन क्या होगा कि कोई टीचर ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में स्कूल्स में नहीं पढ़ाएगा और किसी भी प्रकार के कोई स्कूल्स नहीं होंगे और सारी पढ़ाई एक तरीके से ऑनलाइन हो जाएगी. सारी पढ़ाई एक तरीके से जो है कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा और कंप्यूटर से ही आप पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर से ही आप डील करोगे. दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल टीचर. और वो कैसा है वो मैकेनिकल टीचर? इट इज़ ब्लैक, लार्ज एंड हैज़ ए स्क्रीन ऑन इट and it teaches the student, gives them exercises and asks them questions. So whatever a teacher, a human being used to do, now everything is done by computer. The computer will teach the students, it will give homeworks and it will ask questions also. It works from a special room in her own house. It can also calculate the marks in no time. So very obvious, for a human being to do certain calculations, it takes a lot of time. But for a computer, it is not at all a big task. It can calculate, marks in no time. ना तो कंप्यूटर के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेशन करना. Margie hates the slot where she has to insert her homework and the test papers. Now there is a particular slot on that mechanical teacher where she is supposed to, submit her homework and test papers, and that slot is something that Margie hates the most. और उसी मैकेनिकल टीचर में एक सेक्शन है जहाँ पर होमवर्क अपना सबमिट करना पड़ता है और वो एक ऐसा सेक्शन है, वो एक ऐसा पार्ट है जिसे सबसे ज़्यादा माजी नफरत करती है. Once the geography sector of the mechanical teacher was too quick, so she got worse marks than before. So what happened, as earlier also we read that she was having certain problems in learning geography. So basically what happened, she was not scoring good marks in geography, and the reason was that level of that geography paper or that level of the test was far more it was of it was very hard in fact for Margie, I would say, and that was the reason she was not actually getting good marks there, and she was very upset about that. Even the counting inspector rebuilt it after 1 hour. What do you mean by counting inspector? A person who can repair a mechanical teacher, or you can call him an engineer. Okay,
So finally, what happened when she was not getting good marks? So it was accounting inspector was called, and he came and he literally checked that mechanical teacher, and he repaired that mechanical teacher, and now everything is fine. And he was very nice to Margie also. She hoped that her mechanical teacher would be taken away for a longer time like Tommy's. His history sector blanked out completely. Now, what happened, as we read it earlier also, that Margie was not very happy. She used to hate the school, she used to hate that mechanical teacher, and she hated, that homework slot the most. So when this mechanical teacher came to repair that when this counting inspector came to repair that mechanical teacher, she was literally expecting that this mechanical teacher will be taken away along with that counting inspector, because it happened with Tommy's mechanical teacher also. और कहीं ना कहीं जो है, मार्जी को ऐसा लग रहा था कि मैकेनिकल टीचर को बनाने के लिए जो काउंटिंग इंस्पेक्टर आएंगे, वो अपने साथ इस मैकेनिकल टीचर को कुछ दिनों के लिए ले जाएंगे, और इस बीच में कुछ दिन आराम कर सकती हूँ, होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई दिन पहले टॉमी का भी जो है हिस्ट्री सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो उस समय क्या हुआ था कि जो काउंटिंग इंस्पेक्टर, जो इंजीनियर आए थे ठीक करने के लिए मैकेनिकल टीचर को, उन्होंने अपने साथ जो है टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है उसे भी साथ ले गए थे उसे ठीक करने के लिए। Tommy says that the book he has found is not about their type of school. Actually, it is about the school of the centuries ago. Now, Tommy is explaining each and everything that is written in that book, and he is explaining all these things to Margie. वो Margie को Tommy बताता है कि पहले ज़माने के जो schools थे वो बिल्कुल भी आज की तरह नहीं थे, बहुत ही different थे. He finds that students in the past had a real man as a teacher who taught the boys and girls. Tommy also tells this to Margie that उस ज़माने में, पहले ज़माने में टीचर कोई मशीन नहीं होता था, कोई कंप्यूटर टीचर नहीं होता था, बल्कि एक रियल आदमी, रियल मैन यूज्ड टू टीच ऑल द चिल्ड्रन, और एक असली इंसान जो है बच्चों को पढ़ाया करता था. He gave them homework and asked them questions. They had a special building and all children went to school. All of them learned the same thing. Now further Tommy said that that time these teachers who were actually human beings, they used to give homework and they used to ask questions, and there was a special building where all the children used to go and used to sit together and used to learn the same thing. टॉमी ये भी बताता है माजी को कि पहले ज़माने के जो स्कूल्स हुआ करते थे वो आज के ज़माने की तरह नहीं हैं. पहले एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी और उस बिल्डिंग में सारे बच्चे जाया करते थे, और उन्हें पढ़ाने वाला कोई कंप्यूटर नहीं बल्कि एक इंसान होता था, और वही इंसान होमवर्क भी देता था, क्वेश्चंस भी पूछता था, और सारे बच्चे एक साथ क्लास में बैठकर एक ही चीज़ पढ़ते थे. First, Margie could not understand how a real man could be a teacher, nor could she understand how every student were taught the same thing. Her mother says that education must fit each child's mind. Now Margie is very much confused, because she is not at all ready to accept this fact that a real man was actually a teacher in past years or in past days. और माजी बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि एक इंसान कैसे टीचर बन सकता है, और टीचर तो अमूमन एक कंप्यूटर ही हो सकता है. एंड अनदर थिंग वाज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू बिलीव, एंड व्हाट वाज दैट, कि सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कंडीशन बहुत ही डिफरेंट होगी और सारे बच्चे अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और अपने अपने लाइक और डिसलाइक के हिसाब से जो है वो सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे और पढ़ाई करेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए कंपलसरी, वी हैव टू स्टडी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एंड वी हैव दिस सेम करिकुलम, वी हैव दिस सेम सिलेबस फॉर 9th क्लास स्टूडेंट्स, सेम फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स. सो एक सब मिल के बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नामुमकिन है. और मार्जी की मदर भी ये कहती है कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की जो एजुकेशन है वो हर बच्चे के माइंड के हिसाब से देनी चाहिए. बट इन हर ओपिनियन
those schools were funny and she wants to read more about them. But somewhere Margie is fully impressed with the schools that were in past. लेकिन जो पुराने ज़माने में जो स्कूल्स थे उसके बारे में सोचकर माजी बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत इम्प्रेस्ड भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं माजी को ये भी लगता है कि वहाँ पर पुराने ज़माने के स्कूल्स में जो सबसे अच्छी बात क्या थी कि सारे बच्चे मिलकर जाते थे, फ्रेंडशिप होती थी, सब साथ रहते थे और एंजॉय करते थे, एक दूसरे का हेल्प करते थे। और यहाँ पर ऐसा अब नहीं है। आप अपने रूम में बैठकर मैकेनिकल टीचर के सामने बैठकर आप पढ़ाई करते हो, देयर आर नो फ्रेंड्स, नोबडी इज़ देयर टू हेल्प यू आउट, एंड देयर इज़ नो स्पेशल बिल्डिंग, एंड देयर इज़ नो वन as a human being who is going to teach you. Now it is time for Margie and Tommy for their school. Margie, but in her opinion, those schools were funny and she wants to read more about them. But somewhere now Margie and Tommy, they both have to attend their respective classes, but still Margie is thinking about the old type of schools, and still she is feeling that there was a lot of fun in the schools that were in the past. So I hope you have understood this summary of this chapter. I have highlighted some important points, and these are the important points. You have to emphasize, you have to focus on these important lines or these important points. Still, if you have any confusion, you can ask me in the comment section. And already in the beginning of the video I have told you that line by line explanation of this chapter has been provided in the form of video, and the link is given in the description box. You can watch that video from there. So that was all from this video. I hope everything is clear to you. So take care, thank you, and God bless you.